प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पॉलिटी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को जो है 15 दिन एक्स्ट्रा जो है वो सेल करने के लिए जो है अलाउ कर दिया है। जब भी अगर कभी जनरल इलेक्शंस हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के इलेक्शंस हो, तो उसके उस साल के में 15 जो दिन एक्स्ट्रा जो है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेच पाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि अभी तक सिर्फ 4 बार बेच पाती हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए। और अब जो है 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा उनको टाइम मिल जाएगा, ताकि असेंबली इलेक्शंस में भी, अब समझ लो कि इन चारों महीने में इलेक्शंस नहीं है, किसी और महीने में समझ लो दिसंबर में इलेक्शन है, तो उनको तब वो 15 दिन का टाइम वो यूज़ कर सकती हैं अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेचने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। एक फाइनेंशियल टूल है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस दी जा सकती है और इससे एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड किया जा सकता है। कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं होता और उस पर कोई भी जो है इसकी डिमांड वापस नहीं की जा सकती। ठीक है, और इसको डिजिटली ही खरीदा जा सकता है या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के थ्रू ही खरीदा जा सकता है। और 2018 में गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई थी। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जो है वो इस बॉन्ड को परचेज कर सकती है और 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे मल्टीपल्स में इसको खरीदा जा सकता है, सिर्फ कुछ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस से। इनकी वैसे तो लाइफ जो है वो सिर्फ 15 दिन की होती है और इसको सेक्शन 29A से में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को डोनेशन देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और 10 दिन के लिए ये जो है विंडो निकलती है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में, जब इसको परचेज करके किया जा सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। और एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इसको इन कैश करा सकती है। इस टाइम को जो है वो 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, ताकि इलेक्शन में अब कभी किसी और टाइम पर इलेक्शन हो तो उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कैश करा सकें, है ना। तो ऑफ कोर्स, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कमीशन को बताना भी पड़ता है कि कितने उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसे डोनेशन आया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया बैक्ड कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो जो एक 5 ईयर प्रोग्राम लेके आएंगे जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड बनाए जा सकें। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्या होंगे? कोई भी डिजास्टर आने वाला है तो उससे आपको थोड़ा पहले ही बताए, अगर पता लग जाए तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। तो यही प्रपोजल है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कि हम $3.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे 2023 से 2027 के बीच में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, खासकर ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं होते, तो उनको पता नहीं लगता है कि कब उनके उधर कोई साइक्लोन आएगा, कोई टाइफून आएगा या कोई भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो है वो डिजास्टर होगा। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया है COP27 में, शर्म शेख में हो रही है, आपको पता है, हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग वर्ल्ड की हाफ ऑफ द कंट्रीज़ के पास ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं होते हैं और इतने ज़रूरी हैं ये कि अगर सिर्फ 24 घंटे पहले हमें किसी नेचुरल डिज़ास्टर का पता लग जाए तो हम उससे होने वाले हार्म को लगभग 30% रिड्यूस कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ $800 मिलियन लगाने से हम 3 से लेके $16 बिलियन पर ईयर के हम डैमेजेस को बचा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसको करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है इसको जो है आगे बढ़ाने को कहा गया है। तो अब हम CDRI के बारे में देखते हैं। तो कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर PM मोदी का एक इनिशिएटिव है। UN क्लाइमेट चेंज समिट जब 2019 में हुई थी तो वहाँ पर PM मोदी ने अनाउंस किया था और ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इसमें नेशनल गवर्नमेंट्स, UN की एजेंसीज और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, प्राइवेट सेक्टर और नॉलेज इंस्टीट्यूशन सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ किया जा सके। ठीक है, अब इसमें कोई फंडिंग तो नहीं है, लेकिन नॉलेज सेंटर होगा, ये नॉलेज शेयर की जाएगी मेंबर कंट्रीज के साथ कि कैसे वो अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर से प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ही रेजिलिएंट बनाया जाएगा ताकि वो डिजास्टर्स को विदस्टैंड कर सकें। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। गवर्नेंस और आपके जो है इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र
कल्याण योजना के तहत लगभग 1 लाख वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको जो है 2015 में लॉन्च किया था, ताकि वेलफेयर ऑफ एरिया, ऐसे जो एरियाज जहाँ पर माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस चलते हैं उनकी वेलफेयर की जा सके। किससे पैसा कहाँ से जनरेट हो गया? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से, ठीक है। तो ऑफकोर्स वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं इन एरियाज़ में, और ताकि एडवर्स इम्पैक्ट जो हो रहे हैं वहाँ पर माइनिंग की वजह से उसको भी मिटिगेट किया जा सके, और वहाँ के लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी मिल सके, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक प्रोविजन रखा गया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएंगी जहाँ पर माइनिंग की जाती है, और जो भी जिसको भी माइनिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगर तो 2015 से जो है पहले का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो जो वो रॉयल्टी पे कर रहे हैं उसकी 30% जो रॉयल्टी है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जाएगी, और उस पैसे को जो है एक तरह से उस फंड को जो है बनाया जाएगा, जिसको बाद में वेलफेयर के उसी रीजन के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर 2015 के बाद किसी को जो है माइनिंग लीज मिली है तो उनको 10% जो है उनको रॉयल्टी जो है डीएमएफ में डालनी पड़ेगी। अब इस फंड्स की यूटिलाइजेशन कैसे होती है? जो डीएमएफ में पैसा आ जाता है रॉयल्टी से निकलकर, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी? तो 60% जो फंड्स हैं वो हाई प्रायोरिटी एरियाज जैसे ड्रिंकिंग वाटर या हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, ऐसे प्रोजेक्ट्स में उन एरियाज में लगाए जाएंगे। बाकी का जो 40% बचता है वो बाकी के अदर प्रायोरिटी एरियाज में पैसा लगाया जाता है, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इरीगेशन, एनर्जी या वाटरशेड डेवलपमेंट करना उन एरियाज की जहाँ पर माइनिंग की जा रही है। क्योंकि अब आपको पता है कि जहाँ से हम माइनिंग कर रहे हैं तो हमारा वहाँ का फर्ज बनता है कि वहाँ की हम लोकल पॉपुलेशन को, वहाँ के लोकल लोगों को हम लाइवलीहुड भी दें, और वहाँ से हम क्योंकि रिसोर्सेज ले रहे हैं तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने रिसेंटली मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट को जो है अटेंड किया है COP27 इजिप्ट में। अब मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने कार्बन एमिशंस जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन से वो एमिट कर रहे हैं उसको लगभग 60% तक कम करें, ठीक है। कैसे कम करेंगे? 50 बिलियन ट्री लगाने का उनका प्लान है मिडल ईस्ट में, और 200 मिलियन हेक्टेयर का डिग्रेडेड लैंड जो है वो उसको रिस्टोर करेंगे। फिर ये सबसे पहली बार जो ये मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो समिट है, ये सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने इसको रियाद में 2021 में अक्टूबर में इसको जो है वो होस्ट किया था। अब इसको दोबारा होस्ट किया गया, जिसमें हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया है। सऊदी अरेबिया का प्लान ये है कि वो आने वाले टाइम में 50% इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये है क्या? सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने इसको जो है स्पेस फैसिलिटी को बनाया है, ताकि जो है कोची में इसको जो है वो बनाया है, लॉन्च किया है। ये होगा क्या कि ये एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन फैसिलिटी है जिसमें सोनार सिस्टम्स को जो है वो चेक किया जा सकता है, उनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। और इंडियन नेवी के जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, चाहे शिप हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उस पर उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। इसको बनाया किसने है? मैसर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग चेन्नई कंपनी ने इसको बनाया है। जितने भी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग की स्टेचुटरी नीड थी उन सबको पूरा किया है इस स्पेस सिस्टम ने, स्पेस फैसिलिटी ने। और इसका होगा क्या कि जितने भी सोनार सिस्टम्स हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसको बहुत जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, और इसके पैकेजेस को जो है वो रिकवरी भी की जा सकती है यूज़ के बाद, और ये आपके 100 मीटर्स तक की डेप्थ तक में इसको लेके जाया जा सकता है, और इसको यूज़ किया जा सकता है सोनार सिस्टम्स को चेक करने के लिए या फिर इवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। तो आपको पता है फरवरी 2020 में ही लॉ कमीशन जो है 22nd लॉ कमीशन को जो है नोटिफाई कर लिया गया था, लेकिन ऑफ कोर्स ड्यू टू सम रीजंस उसको अभी तक जो है वो काम नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके जो है चीफ नहीं थे। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बना देती है। चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लॉ को रिवाइज करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए जो है पहली बार फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया। उसके पहले चेयरपर्सन कौन थे? 1835 में लॉर्ड मैकॉले बने थे, ठीक है। फिर लॉ कमीशन का जो जनरल टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, और लॉ कमीशन क्या काम करता है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कहे या फिर वो सुओ मोटो भी एक्शन ले सकते हैं, और किसी भी लॉ को के ऊपर रिसर्च करना या फिर एग्जिस्टिंग लॉ जो कंट्री में चल रहे हैं उनको रिव्यू करना कि क्या वो अभी समय पर जो है, अभी के समय के हिसाब से जो है वो फाइन ट्यून है, और
लॉ से रिलेटेड रिफॉर्म्स लेके आना कंट्री में, सजेस्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इन लॉज में जो है ऐसे ऐसे जो है अमेंडमेंट्स करो या फिर इनको रिफॉर्म करो, ठीक है। इसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती है, जो भी नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि इतने मेंबर होंगे, इसका ये चेयरपर्सन होंगे, तो उसके हिसाब से ही जो है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया चलता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is electoral bonds. So this topic is important for your polity section. So Ministry of Finance through Department of Economic Affairs has recently amended the electoral bond scheme so that the political parties will get extra 15 days in case per year in case there is any general election or state assembly elections, so that they will have more time to encash the the electoral bonds that they have received as political donations. So you know that currently these electoral bonds were sold 4 times a year in January, April, July, October. But let's suppose that there are elections in December, like we have this Gujarat Assembly elections. In that case, the political parties were finding it difficult to encash these bonds. So now 15 additional days will be provided, and the political parties will be free to use these days and encash their political donations that they have received in the form of electoral bonds. So what are electoral bonds? So electoral bond is a financial tool which is used to make political donations to political parties, and these bonds are issued to only eligible political parties. Not all political parties can use this facility. So these electoral bonds do not have any interest, and they can be purchased only digitally or with the help of a demand draft or check. And this scheme was launched by the Union government in 2018. So any citizen of India or any body incorporated in India is eligible to purchase this bond, and this bond is available in the multiples of 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, or 1 crore, and it is available only in the specified branches of State Bank of India. So generally it has a life of only 15 days, and it can only be used to make donations to the political parties which are registered under Section 29A of Representation of People's Act of 1951. And these bonds were generally available for the purchase period of 10 days each in the months of January, April, July, and October. And these bonds could be encashed by any eligible political party through the designated bank account with the authorized bank, in this case State Bank of India. And any funding that these parties are receiving through this electoral bond, they have to disclose it to the Election Commission. So the next topic is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. This topic is important for environment section and also international relations. So India-backed coalition, the proposal which was made by India-backed Coalition for Disaster Resilient Infrastructure has been accepted by World Meteorological Organization, and they have recently announced a 5-year program to establish early warning systems around the world. And the proposal says that we will invest about $3.1 billion between 2023 and 2027, so that infrastructure and capacity in terms of early warning systems in the countries could be established. This was announced by UN Secretary General at the ongoing COP27 climate conference being held at Sharm el-Sheikh, Egypt. And what is the need of these early warning systems? You know that nearly half of the world's countries do not have any early warning system, so they are bereft of the early warnings that can save the lives and also resources in case of a climate induced disaster. So just even of 24 hours notice of an upcoming hazard can reduce the harm by almost 30%. So that's why just spending 800 million per year on early warning systems can save up to $3 to $16 billion of damage per year. That's why it is important to develop these early warning systems. Also, this was suggested by CDRI, which is backed by India. So what is CDRI? You know that it was launched by the Prime Minister of India at the UN Climate Change Summit in September 2019, and it's an international collaborative platform in which the national governments, UN agencies and its programs, multilateral development banks, private sector knowledge institutions, they all have come together to make the critical infrastructure climate proof. So all the member countries of CDRI, they will cooperate with each other in the form of establishing a knowledge center in member countries, so that they can share and learn best practices from each other. This initiative will not create any new infrastructure, but it will focus upon making the existing and upcoming infrastructure climate proof, or we can say robust and resilient, so that it can withstand any climate induced disaster. So the next topic is Pradhan Mantri Khanij Kshetra
Kalyan Yojana. This topic is important for your economy section. So, under the Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana, over 1 lakh welfare projects have been completed recently, and this is a scheme of Ministry of Mines, which was launched in 2015, so that welfare of areas where mining is occurring can be done by using the funds which have been generated by district mineral foundations. You know that in every district where there is mining related operations are undergoing, district mineral foundations are mandatory to be established, so that the funds that these mining companies will generate in the form of, and they will pay in the form of royalty to the government. Out of them, certain funds will be earmarked by district mineral foundations to be used only for the welfare of these mining related operating areas. So the aim is to develop and welfare projects in these mining affected areas, and to mitigate any adverse impact during or after mining, also to create sustainable livelihoods for the people who are affected by mining. So this DMF has been made mandatory under the Mines and Mineral Development Amendment Act of 2015, and any miner which is having the license to do so in any mining related area before 2015, they will have to pay an amount equal to 30% of the royalty that is payable to them to the DMFs, and after 2015 the rate of contribution has been reduced to 10% of the royalty payable, and all this money goes and gets deposited into district mineral foundations. And the funds, how these funds are utilized: 60% of the funds are utilized in high priority areas in the form of drinking water supply, healthcare, education, etc., and the rest of the 40% is utilized for other priority areas like creation of physical infrastructure in these mining areas, irrigation facilities, energy, and even watershed development. So the next topic is Middle East Green Initiative. This topic is important for your environment and international relations. So Union Environment Ministers has recently attended the Middle East Green Initiative Summit at COP27. So the initiative aims to reduce carbon emissions from regional hydrocarbon production by more than 60%. How they will be doing it? They aim to plant almost 50 billion trees across Middle East and restore an area equivalent to 200 million hectares of degraded land. So the first Middle East Green Initiative was launched by Saudi Prince Mohammed bin Salman in Riyadh on 25th October of 2021, and it's the first of its kind regional dialogue on climate. And this was initiated by Saudi Arabia because it wants to rely on renewables for 50% of its electricity needs by the year 2030. So the next topic is Submersible Platform for Acoustic Characterization and Evaluation. So this topic is important for your security section. So DRDO has recently launched the space facility at Naval Physical and Oceanographic Laboratory of Kochi, and this space will be a platform where testing and evaluation for sonar systems can be done by, and this facility will also be deployed on Indian Navy's ships, submarines, and helicopters. This has been constructed by Messrs. Larsen and Toubro Shipbuilding Company based in Chennai, and the design and construction of this platform has met the statutory needs of Indian Register of Shipping. This will be utilized for evaluating sonar systems, and it will be quickly deployed, and it will be easy to recover and it will have scientific packages like sensors and transducers. This will also have the capability to go at depths of almost 100 meters, and they will be able to evaluate the sonar systems. So the next topic is Law Commission of India. This topic is important for the polity section. So recently, the retired High Court Chief Justice Rituraj Awasthi ji has been appointed as the chairperson of Law Commission. You know that Law Commission was notified on February 24th, 2020, and it's a non-statutory body, which means that the government is not mandated by any law to form this Law Commission of India, but the government does it by an executive action. So they just notify it in the Gazette, and this Law Commission of India comes into force. The first Law Commission of India was made by the Charter Act of 1833, and the first chairperson of the first Law Commission of India was Lord Macaulay. In 1835, he assumed this chairpersonship. The tenure of Law Commission is for 3 years. The current Law Commission is the 22nd Law Commission, and Law Commission
has the task to which or the task that they perform is to undertake research in law and review of existing laws, and to suggest the central government that these laws must be reformed, or this law has become outdated and it should be dispensed away with. So it can this Law Commission of India can work after a reference has been made to it by the central government, or it can also take a suo moto action. Okay, so this particular point is important, that Law Commission of India can also take a suo moto action. So of course it goes on to suggest the central government, and it is the mandate of the central government to either accept the recommendations of Law Commission of India or to reject it. Okay, but generally they in a broader sense they accept the recommendations because they have formed it themselves. So any law related reforms in the justice delivery system of the country is also suggested by this Law Commission of India. It does not have any fixed composition. It depends upon the notification that the government releases time to time whenever it establishes this Law Commission, and there is currently no fixed composition, and it is based upon the decision of the government. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.